Pakistan is dying. अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का। क्या वो पाकिस्तान के ऊपर उनकी तरह टीवी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। राशन लेने के लिए आया, घर में जो मासूम बच्चे जो हर एक तरस रहा है और भूख और इफ्लास से लोग मर रहे हैं। लोग आवाम परेशान हो रही है, इसलिए 650 रुपए का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है भाई। An economic collapse, rising threats from Tehreek-e-Taliban and Baloch rebels, Aam Aadmi starving, crime skyrocketing, police out of supplies, army low on morale, youth wants to abandon sinking ship. It is a crisis born and bred in the rogue nation. But like all things geopolitical, this Pakistan-made crisis has far-reaching consequences. As Islamabad runs from pillar to post with a begging bowl, the situation for the broke nation worsens day by day. And as a new crisis hits Pakistan every day, its citizens are starting to look for a way out. It may, however, mean India will have to push the implementation of a controversial piece of legislation, the Citizenship Amendment Act. भारत की संसद ने नागरिकता के कानून में जो सुधार किया है वो हजारों प्रतिशत सच्चा निर्णय है। A report by the Pakistan Institute of Development Economics shows that 67% of youth between ages 15 to 24 want to move abroad for better opportunities. What this startling number signals is a massive refugee crisis set to follow the financial disaster. Devastating floods, crippling collapse of the economy, terror, breakdown of law and order, and a general disregard for minority rights may cause a chunk of Pakistan's population to seek refuge in its neighbourhood. And who will these helpful neighbours most likely be? India, of course, but at over 130 crores, the population in India is almost bursting at the seams. More refugees spell more trouble for New Delhi. The COVID-19 pandemic and the subsequent threat of global recession have already put immense pressure on developing economies. And India has not sailed through the choppy waters completely unharmed either. As the situation turns from bad to worse and a refugee crisis takes shape, the Modi government may have no choice but to implement the CAA at the earliest. CAA इस बिल से, इस एक्ट से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को नहीं होने वाला। इससे भारत की माइनॉरिटी को कोई नुकसान होने वाला नहीं। जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहाँ है इसको भी हम नागरिक बना दें? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दें? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहाँ नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? The Citizenship Amendment Act sparked massive protests across India in 2019 and at the beginning of 2020. At the time, both PM Modi and Home Minister Amit Shah had defended the legislation. The act seeks to make citizenship easier for refugees from Muslim-majority countries like Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. The controversial act had the opposition up in arms. It is not clear why it was necessary, why it had to be pushed through. The consequences even for our foreign relations have been terrible. Rahul Gandhi had even called it demonetization 2.0, claiming it would destroy India's poor.
ये नोटबंदी नंबर 2 है। इससे हिंदुस्तान के सब गरीबों को ऐसा नुकसान होने वाला है, नोटबंदी को भूल जाएं वो। ये झटका जो लगेगा ना, नोटबंदी से दुगना बड़ा झटका है। However, now the CAA is all the more crucial if a tide of refugees flows out of Pakistan into India. It is not a matter of pure economics either. It could very well be a security threat if Pakistanis start coming to India and getting citizenship. CAA will at the very least be able to identify the refugees who came to India before December 2014, thus easing the government's task a little. No country in today's economic climate wants millions of more mouths to feed. And though the Indian Constitution provides for rights to life, liberty and dignity, it may be difficult to extend said freedoms to everyone. In Amrit Kal, when PM Modi coined Vasudhaiva Kutumbakam as the motto for India, making the world one family is easier said than done. It is in India's interest that the centre puts the pedal to the metal on the implementation of the Citizenship Amendment Act 2019.